Okay. Good afternoon, everyone. My name is Shubham, and we are bringing you through SnapSolve. We are bringing you the live classes, and SnapSolve has been conducting live classes in the past as well. अभी आपको classes हो रही थी, वैसे ही अब ये आपको class मिलेगी. This is a YouTube live class being given by SnapSolve, right? So before we start, we'll just wait for a few minutes, and we will let people join, then we can start. Our chapter is going to be matter in our surroundings. That's the chapter number 1 in ninth chemistry. Class ninth की chemistry में सबसे पहला chapter है matter in our surroundings. वो हम करने वाले हैं. But before we start, let's have a quick talk of what is going on, right? So uh, amid this pandemic, इस pandemic situation में, just to make sure that your studies go on, right? SnapSolve is bringing you live classes, and other than that, you're also encouraged to download the Telegram app where you'll be getting the access to unlimited notes and materials, right? You'll get access to many materials, study materials, notes, assignments, exercises. You'll get them all for free. So please join Telegram group of SnapSolve. And here we are going to study this chapter, matter in our surroundings first, right? So let me just see if people are joining. Okay. फाइन वी स्टिल हैव गॉट फ्यू मिनट्स लेफ्ट. ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं. मैटर इन आवर सराउंडिंग्स इट इज. Okay, meanwhile I must tell you that the class ninth students who have just entered into class ninth, and previously they were in 8th standard, now the science is going to get little different for you people. अब आपको science में ज़्यादा feel आएगी. Now science is going to become little more meaningful, right? So and it's also the fact that अब जो आप 9th या 10th में पढ़ते हो वो आपको फिर directly काम में आता है when you study your 11th and 12th. So whatever you study now is going to lay a foundation फॉर वॉट यू डू लेटर ऑन, राइट? जो आप बाद में करेंगे, जो आप बाद में पढ़ेंगे, वो इससे रिलेटेड होगा, राइट? सो राइट, सो नाइन्थ केमिस्ट्री इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू डिड इन एट्थ. ठीक है, ये उससे थोड़ा डिफरेंट होने वाला है. एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी हाउ द चैप्टर्स आर सीक्वेंस्ड, यू नो. हम अगर साइंस, फिजिकल साइंसेस में बात करते हैं तो हम मैटर के बारे में बात करते हैं पहले. तो द फर्स्ट चैप्टर इज अबाउट दैट ओनली. हम मैटर के बारे में बात करेंगे, देन वी आर गोइंग टू सी अदर चैप्टर. सो दीज आर ऑल स्ट्रैटेजिकली सीक्वेंस्ड, है ना, वो सीक्वेंस में है. We will wait for a couple of minutes more, then we can start with our discussion of the chapter, right? I'm sure the voice is clear and so is the video.
Fine. We are just letting a minute or two, and we're letting if someone joins here, then we can start with our discussion. So I think we have more people joining us one by one. We are just left with 1 minute. ठीक है, 1 minute में हम start करने वाले हैं. ठीक है, the discussion is going to be of matter in our surroundings. ठीक है, matter in our surroundings करेंगे हम. ये 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, and this is going to lay foundation to all the chemistry chapters that you are going to do in the near future, right? Okay, I think we are good to go. And before we start, I must tell you again that you are like this live class is brought to you by SnapSolve. SnapSolve is bringing you the live class of chemistry. This time you have got similar classes of physics, biology, maths, and other chemistry classes, right? For all the standards, you'll be getting classes from 9th to 12th, and those preparing for NEET and JEE. तो यहाँ पे सबके लिए classes हैं. Apart from these live classes, what you can look forward to is to join the Telegram group. Telegram group पे आपको क्या मिलेगा? You'll get access to many questions, you'll get worksheets, notes, and everything available to you. So make sure that you join the group. Make sure that you install SnapSolve app. In SnapSolve app, you'll be able to take the pictures of your questions and you'll be able to get them solved, as the name says, SnapSolve. So you'll have to take a snap and get the questions solved by the experts, right? So now we are in a position to begin. We will start with the chapter now. Yeah. So the chapter is matter in our surroundings. ठीक है, class 9th first chapter chemistry chapter, matter in our surroundings. And you see, before we start, the first thing that we discuss about is matter. जो सबसे पहली बात हम करते हैं वो क्या करते हैं, किसके बारे में करते हैं? वो हम मैटर के बारे में करते हैं, राइट? एंड दैट्स because whenever you study physical sciences, whenever you study a science, the first thing that we know, the first thing that we talk about is matter. हम सबसे पहले मैटर की बात करते हैं, ठीक है? Now the first question is, what is matter? Matter है क्या? Right, so we first have to understand कि matter है क्या. So anything which has got mass and volume, ठीक है, anything which possesses mass and volume is going to be called as matter. So just look at things around you, है ना? You just try to see the things present around you. You'll be able to see a textbook, maybe you'll be able to see a bottle of water, right? So बहुत सारी चीजें आपके आसपास हैं. Just try to figure out if they have got any mass, right? You might conclude कि हाँ उनमें mass होता है, definitely mass होता है. And also apart from that, you also see that कि इसमें they are also occupying some volume, ठीक है? उसमें कहीं ना कहीं वो कोई volume occupy कर रहे हैं, they are occupying some space, ठीक है? They are taking up some space. So ऐसे substance को हम क्या बोलेंगे? Matter बोलेंगे. So we can define matter as anything which has got mass and volume. Anything which has got mass and occupies space is called matter. राइट, सो दैट्स आवर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. जब हम अपने आसपास देखते हैं, अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, तो व्हाट डू वी सी मैटर्स अराउंड अस. दैट्स व्हाई वी हैव गॉट दिस चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, राइट? सो वी हैव ऑल मैटर्स प्रेजेंट अराउंड अस इन द सराउंडिंग. हमारे सराउंडिंग में क्या है? इट इज फुल ऑफ मैटर्स प्रेजेंट, राइट? नाउ टॉकिंग अबाउट दीज मैटर्स, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन ऑब्जर्व, राइट? अब आपने देख लिया कि चलो मैटर है, मैटर के एग्जांपल्स भी हम देख सकते हैं. देयर आर मेनी एग्जांपल्स. आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड यू सम एग्जांपल्स, राइट? सो अदर देन दैट, we have got other we have got matter, we have got different forms of matter. So once you decide, once you understand कि अच्छा ये matter है, तो अब क्या होता है? What is next? Next you try to observe, you try to see कि वो matter कैसा है, ठीक है? तो मैटर जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, राइट? सो
just take up a simple example of a textbook or the mobile phone you're using, ठीक है, तो वो आपको दिखता है कि वो solid state में होता है, we call it solid, है ना. Then there is a different kind of matter, you have got a water, आपके पास there is a glass of water, ठीक है, तो आपके पास water भी है, right. So we have got other forms as well. Okay, we have people joining us. We have Jaya joining us. Hi, Jaya. So, before we begin, let me again remind you that this class is being brought up by SnapSolve, where you'll be able to get, if you download the SnapSolve app, you'll be able to get the real-time solutions of the queries. आपके जो भी questions होंगे आप उनको पोस्ट कर सकते हैं, आप उसका स्नैप लेके शेयर कर सकते हैं ऑन द एप्लीकेशन, देन यू विल गेट योर सॉल्यूशंस आल्सो. And other than that, if you join the Telegram group of SnapSolve, you'll be able to get access to many questions. You'll be getting many questions and study materials. You'll get many resources for practice. So I must recommend you to download SnapSolve app and also join the Telegram group of the same. Right. So as far as this matter around us is concerned, we see that कि हमारे को जो matter present होता है आसपास वो तीन forms में होता है. वो solid के form में हो सकता है, वो liquid के form में हो सकता है, वो gas के form में भी हो सकता है, as we can see. So we have simply taken example of solid. We have considered ice, and the same substance in liquid phase is water, and we can also say water vapor or gas is already present. So these are the basically three forms in which matter is going to exist. मैटर जो हमारे आसपास होगा वो जनरली इन तीन फॉर्म्स में होगा. मैं जनरली इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वी हैव गॉट टू मोर स्टेट्स ऑफ मैटर. वी हैव गॉट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एंड वी हैव गॉट प्लाज्मा एज वेल. बट हम उसकी बात पहले नहीं करते हैं. ब्रॉडली इफ यू डिवाइड, ठीक है, तो मैटर के तीन ही फॉर्म्स होते हैं. एंड ऑल्सो अब ये फॉर्म्स कैसे आए पहले, what basis did we classify this matter into these three types, है ना. ये जो तीन टाइप्स आए वो किस बेसिस पे आए हैं, राइट. सो दीज आर बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, किस बेसिस पे आए हैं ये? फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आए हैं. मतलब इफ यू ट्राई टू ऑब्जर्व मैटर एंड देन यू ट्राई टू सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने का मतलब क्या है? मतलब आपने देखा कि अब ये कैसा है, इसका शेप फिक्स्ड है कि नहीं, ये रिजिड है कि नहीं, ठीक है, अब ये फ्लो हो रहा है कि नहीं, इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है कि नहीं, ठीक है. सो ये दीज आर ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज विच यू आर ट्राइंग टू ऑब्जर्व. व्हेन यू सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, देन यू ट्राई टू क्लासिफाई. तब आप उसको देखते हो, अच्छा ये सॉलिड होगा, ये लिक्विड होगा, ये गैस होगा, ठीक है. सो अब इन तीनों में क्या होने वाला है वो तो हम देखेंगे. वी हैव सपना joining us. Good afternoon, Sapna. Right. So in this, what we are going to do, we are going to observe first of all how these forms are differing in properties, right. In तीनों forms में differences क्या है, and on what basis are we going to classify a given matter into the category of solid or liquid or gas. हम किस basis पे वो करेंगे, right. So that is something that we are going to see. सो उससे पहले हमें बस इतना समझ लेना है अभी कि मैटर जो है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट होने वाला है. इट इज गोइंग टू एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ the three substances, the three states, that is solid, liquid and gas. अब इन तीनों में क्या डिफरेंसेस होंगे, ये कैसे लाई करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, वो सब हम देखेंगे, राइट. So for time being, we just understand that these are going to be the three forms in which matter is going to exist, right. Okay, now how do we get this? We have got these, I just now stated, I just now told you that we have got these forms based on the physical properties of the matter. ठीक है, तो physical properties के basis पे आया है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है that we have got the classification of matter based on their physical properties. That's why we have got physical forms of water. ठीक है, physical forms का मतलब क्या है कि we have used physical properties, ठीक है, we have used physical properties to decide if a given substance is going to be a solid, या फिर वो liquid होगा, या फिर वो gas होगा, ठीक है. So that's why since we are using physical properties, तो आपने इसको लिखा है physical forms of matter. In the second chapter of 9th class, when you do that is matter around us pure,
then you see that कि हम वहां पे क्या करते हैं कि we take chemical classification, we take chemical composition as the basis of classification. तब आप इसी मैटर को क्लासिफाई करेंगे डिफरेंट कैटेगरीज में, बट वहां पे आप फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी चैप्टर 1 में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कर रहे हैं। वी हैव गॉट 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। ओके, सो नाउ अब इसके बाद क्या है कि जैसे मान लो आपने एक सॉलिड देखा, ठीक है, यू ट्राई टू ऑब्जर्व एनी सॉलिड, लिक्विड और गैस, लाइक वी हैव डन हियर। वी कैन सी आइस, वी कैन सी वाटर and even the air. We cannot see air, but we know that there is air, there is a gas, ठीक है। So that is how we see, but remember, नॉट एवरी टाइम what truth is what meets the eye, मतलब जो हमें दिख रहा है वो जरूरी नहीं है कि दैट्स दी ओनली ट्रूथ, दैट्स दी अल्टीमेट थिंग दैट वी सी। अब आपको ये नॉर्मल दिख रहा है, आपको एक सॉलिड दिख रहा है, आपको एक टेक्स्ट बुक दिख रहा है, आपको वाटर दिख रहा है, लेकिन क्या इज इट द फाइनल, इज इट द अल्टीमेट थिंग दैट यू ऑब्जर्व? नो। if you try to observe the same matter, if you try to observe the particles present inside matter, you come to see कि ये जो मैटर है इन सब के अंदर देयर आर वेरी स्मॉल, देयर एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन देम, राइट। जो हम मैटर अपने आसपास देख रहे हैं इन सभी के अंदर क्या है, देयर आर पार्टिकल्स प्रेजेंट, ठीक है। इनके अंदर क्या है, पार्टिकल्स हैं, और कैसे हैं, दे आर, दीज पार्टिकल्स आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। कैसे पार्टिकल्स होंगे, दे आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। सो इफ यू जस्ट ऑब्जर्व अ मैटर, इफ यू जस्ट सी अ मैटर, यू नेवर सी दैट, आप उसके पार्टिकल्स को नहीं देख पाते है ना, आपको पार्टिकल्स दिखते नहीं है, बट इफ यू ऑब्जर्व कि उस मैटर के अंदर है क्या, तो अल्टीमेटली आपको पता चलेगा कि उसके अंदर क्या है, पार्टिकल्स हैं, जो कि हम ऐसे नेकेड आई से देख नहीं पाते हैं, बट इट डज एग्जिस्ट, दीज पार्टिकल्स डू एग्जिस्ट इनसाइड मैटर, राइट। सो अब दिस इज हाउ द पार्टिकल्स आर गोइंग टू लुक लाइक, ठीक है। सो हमने सबसे पहले क्या कंक्लूड किया, व्हाट डू वी कंक्लूड हियर? द फर्स्ट थिंग दैट वी अंडरस्टैंड इज व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है, मैटर हमने देख लिया क्या है। फिर हमने देखा कि हमारे सराउंडिंग्स में मैटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाला है। देन वी कम टू दिस फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड वी सी कि 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। अब इन तीनों में कॉमन ये है कि what whenever given a substance is either solid or liquid or gas, कोई भी हो, irrespective of its state, these all are going to have particles inside them. इन सभी के अंदर क्या होगा, पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब इन पार्टिकल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन पार्टिकल्स की वजह से क्या होगा और ये कैसे डिफरेंसेस हैं इनमें, वो हम देखेंगे। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी कंक्लूड हियर इज दैट these all matters are going to have they're certainly going to have particles present in them, right। उनके बीच में क्या है, particles present हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सपना। फाइन, we'll go along with the chapter and right, so again, I would request everyone who is joining to make sure that you download the SnapSolve app and you also join the Telegram group so that you get free access to materials and the question banks and exercises and whatnot. So go ahead and join the group, right? Okay. So we just now mentioned that matter is going to have particles in them, है ना। मैटर के अंदर क्या होगा, पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये पार्टिकल्स क्या होंगे, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज पार्टिकल्स गोइंग टू बी, ठीक है। ओके, so now we have got characteristics of particles. Now before we just talk about the characteristics, just try to observe in every case, like we have considered a solid here, ठीक है। so this solid also is composed of these particles, ठीक है। solid के अंदर क्या है, ये particles present है। अगर आप किसी solid को just normally observe करते हो तो आपको ये particles तो नहीं दिखते ना, right। so these particles are the ones which are present inside the matter, ठीक है। सो इज द केस विद लिक्विड। अगर आप लिक्विड को भी ऑब्जर्व करो, सो दिस इज हाउ अ लिक्विड विल अपीयर टू अस नॉर्मली। हमें किसी लिक्विड को देखना है तो ये ऐसा दिखेगा हमें, बट मैंने आपको बताया कि हर बार जो हम देखते हैं दैट्स नॉट द अल्टीमेट थिंग टू सी, देर आर मोर थिंग्स टू ऑब्जर्व विच आर नॉट सीन बाई नेकेड आइज, यू नो। सो हम नेकेड आइज से उनको नहीं देख पाते हैं।
तो इस लिक्विड की अगर हम बात करें तो इसमें भी वी कैन सी दैट द लिक्विड इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ दिस काइंड, राइट। सो इसमें भी पार्टिकल्स हैं, एंड सो इज द केस विद गैसेस। ठीक है, गैसेस में भी क्या है, एक गैस को अगर आप ऑब्जर्व करो, अब ये वी हैव टेकन अ बलून, और बलून के अंदर देयर इज सर्टेनली गैस प्रेजेंट। नाउ दिस गैस आल्सो इज कंपोज्ड ऑफ these particles. So you might be able to observe कि ये particles जो हैं वो तीनों में अलग अलग हैं। अलग अलग का मतलब किसी में ज्यादा पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको, किसी में कम पार्टिकल्स दिख रहे हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, यहाँ पे इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं सॉलिड लिक्विड्स और गैसेस में डिफरेंसेस हैं, बट वी विल लाइक होल्ड ऑन टू दोज डिफरेंसेस फॉर टाइम बीइंग, है ना। हम अभी उसके बारे में बात करेंगे। वी मस्ट टॉक अबाउट द पार्टिकल्स फर्स्ट। ठीक है, हम इन पार्टिकल्स के बारे में पहले बात करेंगे, राइट। वी विल टॉक अबाउट द पार्टिकल्स, एंड द फर्स्ट पॉइंट दैट वी मेंशन इज देयर इज स्पेस प्रेजेंट बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, क्या है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। यू माइट अग्री कि किसी केस में ये स्पेस ज्यादा है, किसी केस में ये स्पेस कम है, बट व्हाट वी ऑब्जर्व इज दैट देयर इज सम space between particles, and what is that space going to be called as? It is going to be called as intermolecular space, or at times we also call it interparticle space। ठीक है, अब इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है? अब जैसे इंटर स्कूल मैचेस यू मस्ट बी प्लेइंग, राइट, द स्टूडेंट्स यू मस्ट बी प्लेइंग इंटर स्कूल मैचेस, कि इंटर स्कूल क्रिकेट हुआ, इंटर स्कूल सॉकर मैच हुआ। सो व्हाट इज इंटर स्कूल competition? It's a competition between different schools, right? So if you consider the same thing, if you understand the same analogy, so यहाँ पे intermolecular space है या interparticle space है, इसका मतलब है the space present between different molecules, the space present between different particles। ठीक है, like there is a match between different schools, तो उसको हमने इंटर स्कूल मैच बोला। वैसे ही अगर पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंसेस हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, वी आर गोइंग टू कॉल इट इंटरमोलिक्यूलर और इंटरपार्टिकल स्पेस। ठीक है, सो वी कंक्लूड दैट इनके बीच में क्या है, स्पेस है। नेक्स्ट, देर इज ऑल्सो a force acting between them. There is an attractive force which is trying to keep the particles or molecules close to each other, right? So इसका मतलब क्या है कि इन पार्टिकल्स के बीच में okay, meanwhile we have a comment coming from Sapna. The space is larger in number in gases. Yeah, certainly that's the case, right? So अभी मैंने आपको ये बताया कि पार्टिकल्स जो हैं वो कहीं कहीं मतलब you'll see कि कहीं पे स्पेसेस ज्यादा हैं, कहीं पे स्पेसेस कम हैं, right? So that is something that we are going to talk about when we see the differences between solids, liquids and gases। जब हम इनके बीच के डिफरेंसेस की बात करेंगे देन वी विल टॉक अबाउट इट, है ना। फॉर टाइम बीइंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू कंसंट्रेट ऑन, हम क्या कंसंट्रेट कर रहे हैं अभी, वी आर जस्ट ट्राइंग टू सी हाउ द नेचर ऑफ दीज पार्टिकल्स आर गोइंग टू बी ऑब्जर्व्ड। हम इन पार्टिकल्स के नेचर को कैसे समझें। ठीक है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज पार्टिकल्स गोइंग टू बी, राइट। Fine. Okay. I'll encourage people to ask questions if you have any. Right. So whenever you have got any question of yours, you are always welcome to ask here in the live class, as well as you can post on the application. Right. Okay. So talking about the intermolecular force, ठीक है, जैसे intermolecular space क्या था, space between molecules, वैसे intermolecular force क्या है, it is force acting between molecules, and what is the nature of this force? It is going to be attractive. Now, because of this force being attractive in nature, it will try to keep the molecules close to each other। वो क्या करेगा, वो चाहेगा कि molecules को एक दूसरे के नजदीक रखे, मतलब कि वो attractive force है। ठीक है, तो that's the second thing, है ना। And again, intermolecular force is going to come again when we see the differences between these। ठीक है, so we are just trying to understand these terms first and how these apply to all the particles in general, irrespective of whether it is a solid or liquid or gas। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम सॉलिड की बात करें, लिक्विड की बात करें या गैस की बात करें, ठीक है, ये जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन किए हैं, these characteristics are common to all of them, right? And the third that we see is kinetic energy of particles। So it says that particles possess kinetic energy,
Right. Now, kinetic energy is something that needs to be talked about first. Okay. Kinetic energy, I know that many of you must be knowing what is kinetic energy already. So let me tell you a little about kinetic energy. Kinetic energy is simply energy possessed by a moving body or a body in motion. I'll tell you an example. You just you're going out, है ना? You're going out and you see a car parked somewhere around your house. ठीक है. Nowadays you are not recommended to go out though, so you can consider a hypothetical situation where you are going out. ठीक है, and where there is no pandemic and everything is fine, but that's not the case. So that's why I'm calling it hypothetical, है ना? तो आप hypothetically मान लो कि आप बाहर जा रहे हो, there is a car parked somewhere outside, and you accidentally hit the car. What happens to you? Nothing happens. You just, maybe अगर आपको नींद आ रही होगी तो आपकी नींद चली जाएगी उस टाइम पे, है ना? But nothing wrong will happen to you, right? Imagine the same car is coming on a highway with the speed of 100 km/h, and then you happen to hit the car. Then like something really hazardous will happen, right? So what exactly has changed in this case? पहले भी आप ही थे, अभी भी आप हैं, कार भी वही है. So what exactly has changed? The fact that now this car is in motion, and given the condition that it is in motion, तो अब क्या हो जाएगा? उसमें एनर्जी आ गई है. ठीक है, अब उसके अंदर मोशन होने की वजह से क्या है? उसके अंदर एनर्जी आ गई है. नाउ द सेम कार हैज बिकम सो डेंजरस दैट इफ यू हैपन टू हिट इट, लाइक आई शुडंट मेंशन व्हाट विल हैपन, राइट? सो यहाँ पे हुआ क्या? हुआ ये कि नाउ दैट द सेम कार which was parked and which was very harmless to us, now it has gained a lot of energy, right? So kinetic energy is the energy possessed by a body by the virtue of its motion. बिकॉज ऑफ इट्स मोशन जो एनर्जी आ जाती है किसी बॉडी में, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी. सो यहाँ पे थर्ड पॉइंट इज सेइंग दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, मतलब इट इज ट्राइंग टू से दैट पार्टिकल्स आल्सो, दीज पार्टिकल्स आल्सो आर पोजेसिंग काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, इनमें भी काइनेटिक एनर्जी है, राइट? अब ये काइनेटिक एनर्जी, ओके, Sapna is saying kinetic energy is something which is present in moving bodies. Yeah, that's correct. So whenever there is a body which is in rest, which is at rest, you cannot expect that body to be possessing kinetic energy. उसमें kinetic energy नहीं होगी, right? Okay, so अब यहाँ पे क्या है कि kinetic energy of particles we are saying. So are these particles moving? You might observe that in this case the particles are moving. In the case of gases they are moving. ठीक है, in liquids also they are moving, not that freely of course, and in solids the particles are very close to each other, so they seem to be moving minimum, right? वो hardly move कर पा रहे हैं. Move कर क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि space नहीं है, right? So if I keep a room and if I let 3 students enter the room and they're free to move, they'll be able to move because there is enough space. So if in a classroom I'm like making 50 students enter the classroom, right? So 50 students are already there in the classroom, it's a small room, तो वहां पे उनका movement क्या हो जाएगा? Restrict हो जाएगा, right? So whatever it is, whether they're moving freely or not, उनके पास kinetic energy ज्यादा है या कम है, that's not the point now. The point is the particles will have kinetic energy. The particles will be in motion. ठीक है, so उनमें kinetic energy present होगी. ठीक है, सो ये सब जो है दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स. कोई भी मैटर अगर है तो उसके अंदर पार्टिकल्स होंगे और पार्टिकल्स की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. ठीक है, and we also say that they are in random motion, and because of that random motion only they are possessing this kinetic energy. Random motion की वजह से ही वो kinetic energy possess कर रहे हैं. ठीक है, okay, let's move forward. So now we are going to see the differences between solids, liquids, and so we have got solids here, liquids and gases. ठीक है, तो आपको solids, liquids और gases में differences अब आपको यहाँ पे देखना है. ठीक है, we are going to start that. Now that we have understood कि particles की properties क्या है, तो उन properties के basis पे हम क्या करेंगे? इनके differences को देखेंगे, right? Yeah, okay. So let's move forward. So we have got the first property, shape. मतलब हम shape के basis पे क्या करेंगे? Decide करेंगे कि how are solids, liquids and gases different. ठीक है, अब shape के basis पे ना everyone knows, right? Consider this. ठीक है, यहाँ पे ice है जैसे मान लो, तो आपको पता है ना कि ice
का क्या है, शेप फिक्स्ड है. और कंसिडर एनी अदर सॉलिड, इफ यू कंसिडर एनी सॉलिड यू नो दैट इट्स शेप इज फिक्स्ड, राइट. ऐसा तो नहीं होता कि आपके पास एक टेक्स्ट बुक है विच हैज अ गिवन शेप और आप नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप तो वो टेक्स्ट बुक का शेप ही बदल गया है, वो सिलेंड्रिकल हो गया है, पहले वो क्यूबॉइडल था वो सिलेंड्रिकल हो गया है. दैट विल नॉट हैपन, राइट. इसका मतलब क्या है, द शेप्स ऑफ सॉलिड, ठीक है, इट इज ऑलवेज फिक्स्ड. Consider a liquid. A liquid's shape is not fixed, right? Everyone knows that. So if you keep a liquid, if you store a liquid in a water bottle, it will acquire the shape of the bottle. If you keep it somewhere else in other container, if you keep it in a beaker, तो वो क्या करेगा, beaker का shape acquire कर लेगा. ठीक है. So we conclude that the shape of solid is fixed. ठीक है, सॉलिड्स का शेप फिक्स्ड है. ठीक है, लिक्विड्स का क्या है, शेप फिक्स्ड नहीं है, वी से नॉट फिक्स्ड. एंड सो इज द केसेस विद गैस. गैसेस के साथ भी वही है कि गैस को आप जिस भी कंटेनर में रखोगे तो वो उस कंटेनर का शेप एक्वायर करेगा. गैसेस डू नॉट पोजेस shape of their own. Now the reason why this happens because of the arrangement of the particles. अब जैसे solids में देखो आप, particles क्या हैं, these particles if you see they have got a definite arrangement. ठीक है, वो क्या है, एक डेफिनेट तरीके से अरेंज्ड है. वो अरेंजमेंट हमें लिक्विड्स और गैसेस में नहीं मिलता है बिकॉज दीज पार्टिकल्स इन लिक्विड्स एंड गैसेस इफ यू सी दे आर मेनली फ्री टू मूव, दे आर नॉट पोजेसिंग अ डेफिनेट अरेंजमेंट. डेफिनेट अरेंजमेंट तो नहीं है ना, वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, रैंडमली मूव कर रहे हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी है. ठीक है, तो इसलिए उनका शेप भी क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होगा. ठीक है, सॉलिड्स का शेप फिक्स्ड होगा, राइट. ओके, चलो. Next point is rigidity. Rigidity means it is hardness. When you try to touch a solid or when you touch a liquid or gas, you try to observe that if it is rigid. ठीक है, तो rigid कौन होता है, solids are rigid, we know that. ठीक है, solids are rigid because they are hard, they possess a definite shape. ठीक है, liquids and gases they are both non-rigid. That's a very simple observation and everyone must be agreeing to this. ठीक है, now you can move to the next slide at the same time. ठीक है, चलो. नेक्स्ट डिफरेंस इज गोइंग टू बी ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम. ठीक है, वॉल्यूम आपको बताया मैंने कि व्हेन देयर इज अ मैटर इट मस्ट पोजेस वॉल्यूम. अगर मैटर है तो उसमें वॉल्यूम होगा. ठीक है, कैसे पता चला ये, बिकॉज एवरी मैटर इज ऑक्यूपाइंग सम स्पेस, राइट. सो इफ यू जस्ट सी, इफ यू जस्ट ऑब्जर्व सब्सटेंस, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, राइट. एंड वी एक्सप्रेस दैट वॉल्यूम, राइट. व्हाई डू वी से दैट वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब मे बी इज साइड क्यूब, राइट, साइड इनटू साइड इनटू साइड. ठीक है, या फिर अगर मैंने बोला कि देयर इज अ सिलेंडर, ठीक है, और वो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, इट हैपेंस टू बी पाई आर स्क्वायर एच, where r is the radius of this cross section and h is the height. So हम यहाँ पे जब वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि we are talking about the space it is occupying. ठीक है, so यही वॉल्यूम है and definitely solids are going to have a definite volume. ठीक है, now talk about the volume of liquid. वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फिक्स्ड होता है कि नहीं, सॉलिड्स का तो फिक्स्ड होता है. ठीक है, हम समझ गए. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड एंड ट्राई टू ऑब्जर्व कि उसका लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होगा कि नहीं. ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर मेरे पास 1 लीटर वाटर है, आई हैव गॉट 1 लीटर वाटर एंड नाउ आई एम पोरिंग दिस 1 लीटर वाटर इनटू अ बकेट ऑफ कैपेसिटी 15 लीटर्स. ठीक है, मेरे पास क्या था, मेरे पास 1 लीटर पानी है और 1 लीटर पानी को मैं अब 15 लीटर कैपेसिटी वाले बकेट में पोर कर रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं. तो क्या ये 1 लीटर पानी 15 लीटर पानी हो जाएगा? ऑब्वियसली नहीं होगा ऐसा. इसका मतलब क्या है कि जो ओरिजिनली 1 लीटर पानी था वो अभी भी क्या है, 1 लीटर ही है, राइट. इट मीन्स दैट द वॉल्यूम ऑफ दीज लिक्विड्स इज गोइंग टू बी फिक्स्ड फॉर श्योर, है ना. ये जो लिक्विड्स का जो वॉल्यूम है ये क्या होगा, ये फिक्स्ड होगा. ठीक है, राइट. अब देखिए, सो वी कैन कंक्लूड दैट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स इज ऑल्सो फिक्स्ड. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द गैसेस. अब गैसेस में वॉल्यूम क्या होता है. अब आप क्या करो, जैसे इमेजिन करो देयर इज अ स्मॉल बॉक्स, है ना, एक स्मॉल बॉक्स है एंड यू हैव एनक्लोज्ड
अ गैस इनटू दैट, है ना। आपने क्या किया है, एक गैस को उस स्मॉल बॉक्स में स्टोर करके रखा है, ठीक है। सो मान लो कि अब उस गैस का वॉल्यूम क्या होगा, द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दैट बॉक्स, राइट। आपने क्या किया, यू हैव टेकन ए स्मॉल बॉक्स और उस बॉक्स में क्या किया, उस गैस को इनक्लोज करके रखा है, and volume of that box is exactly the volume of gas. Now consider a case कि अब आप उस बॉक्स को एक रूम में ले आए and now you have opened the box. अब आपने जब उस बॉक्स को ओपन किया तो क्या होगा, whatever gas is present inside the in the box, it will now occupy the room. Now the question is, will it occupy whole of room or it will occupy just a corner in the room? एक जो स्मॉल बॉक्स में है गैसेस, तो वो क्या करेंगे, उतने गैसेस एक ऐसे ही स्मॉल बॉक्स जैसा एरिया या स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे समवेयर एट द कॉर्नर एंड दे विल नॉट मूव टू द अदर कॉर्नर। ऐसा तो नहीं होगा ना, ठीक है। सो व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग द गैस फ्रॉम अ स्मॉल बॉक्स टू अ बिगर रूम, इट डज नॉट हैपन दैट द गैसेस ऑक्यूपाई ओनली अ स्मॉल कॉर्नर, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि वो एक जगह चले जाते हैं एंड दे थिंक कि चलो हम यहीं पे रहेंगे, द रेस्ट ऑफ द कॉर्नर, द अदर कॉर्नर आई एम नॉट गोइंग to go to that corner. That does not happen. So what exactly happens is कि जो भी गैस है उसमें it will occupy whole of the room, it will occupy all the space available to it. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पहले गैस का वॉल्यूम क्या था, इनिशियली द वॉल्यूम ऑफ गैस वाज इक्वल टू दैट ऑफ द बॉक्स in which it was stored. Now if it is transferred to a bigger room, अब उस गैस का वॉल्यूम क्या हो जाने वाला है, अब उस गैस का वॉल्यूम हो जाएगा एग्जैक्टली इक्वल टू द वन बाई वन ऑफ द रूम, ठीक है। जो रूम का वॉल्यूम है अब वो रूम के वॉल्यूम के एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि पूरे रूम में वो गैस अब पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उस रूम के एक छोटे कॉर्नर में गैस स्टोर्ड है और बाकी जो है रेस्ट ऑफ द रूम इज फ्री फ्रॉम द गैस, इट डज नॉट कंटेन गैस। सो होल ऑफ द रूम विल कंटेन द गैस, so definitely the volume of gas is going to be now equal to the volume of the room, right? So that explains the fact कि gases का volume जो है वो fixed नहीं है। पहले वो small box में उसका volume कम था, अब उसको बड़ा space मिला तो अब उसका volume accordingly increase हो गया। So what do we conclude? We conclude that the volume of gases is equal to the volume of container it is kept in. उसको जितना भी स्पेस आप अवेलेबल करोगे वो पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो उसका अपना खुद का वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड नहीं है। सो वी कैन क्लियरली राइट दैट वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। चलो, so this explains the volume. And if you ask me why is this volume not fixed, that's also an important question कि ये volume fixed है क्यों नहीं। वो इसलिए fixed नहीं है because these particles in the gas, they are very free, they are free to move, right? Because they are possessing maximum kinetic energy, isn't it? Because आप देख पा रहे हैं ना, if you just try to observe the particles, आप यहाँ पे particles को देखो, कॉम्पैक्ट है। यहाँ पे अगर आप पार्टिकल्स को देखो तो लूजली बाउंड है थोड़े। गैसेस में पार्टिकल्स जो हैं वो सबसे ज्यादा फ्री दिख रहे हैं, सबसे ज्यादा फ्री है। इसका मतलब क्या है कि दे विल बी एबल टू मूव, राइट। अगर वो मूव कर पाएंगे इसका मतलब क्या है कि नाउ दे विल ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल टू देम। आप उनको जितना भी स्पेस दोगे वो पूरे स्पेस में फिर मूव करेंगे क्योंकि ये फ्री है मूव करने के लिए, ठीक है। दैट्स व्हाई द वॉल्यूम इज नॉट फिक्स्ड एंड दैट केस is not going to happen to liquid and solid because the particles are not very free, they are not going to move, they are not so mobile as they are in gases। ज्यादा मोबाइल नहीं है, मोबाइल का मतलब जो मूव कर सकते हैं उनको मोबाइल कहते हैं, राइट। So we see that the volume of gas is not fixed. ठीक है, this was an important point. We may proceed to the new difference, the next difference now. So we have got now intermolecular space. Intermolecular space is something that we have already talked about और वो हमें देख के ही पता चल रहा है, ठीक है। अगर आप सॉलिड्स को देखो तो इसमें पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस सबसे कम है। तो व्हाट वी कंक्लूड हियर इज कि इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो क्या है, मिनिमम है, ठीक है। उसके बाद लिक्विड्स में क्या है, इनमें स्पेस तब भी मॉडरेट है, मतलब द स्पेसेस present between the molecules in liquid, these spaces are greater than the one in solid। और gases में क्या है, यही intermolecular space क्या है, it is going to be maximum, ठीक है, maximum होगा, ठीक है।
So this also differentiates the solid, liquid and gas on the basis of intramolecular space, right? And next it is going to be intermolecular force. ठीक है, we have mentioned intermolecular force क्या होता है. Let me repeat it for you. Intermolecular force is the attractive force acting between molecules in a matter or particles in a matter. ठीक है, तो हम intermolecular force को हम interparticle force भी कह सकते हैं. ठीक है, what we can also call it is interparticle force because the force is between particles, right? So interparticle force. Now अब ये force किस में ज्यादा होगा किस में कम होगा. Now this force is distance dependent. Okay, just try to understand. इफ देर आर टू मैग्नेट्स केप्ट विद अस, है ना, अगर हमारे पास दो मैग्नेट है और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप उनको जितना क्लोज रखोगे उतना ही उनमें अट्रैक्शन होगा. ठीक है, अब आपने एक एक मैग्नेट को न्यू दिल्ली में रखा और दूसरे मैग्नेट को आपने लखनऊ में रखा है, तो क्या उनमें अट्रैक्शन होगा? नहीं होगा, बिकॉज द डिस्टेंस इज सो फार, द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज सो फार दैट देर इज हार्डली एनी अट्रैक्शन, द अट्रैक्शन बिकम्स नील. सो अगर मॉलिक्यूल्स क्लोज हैं सॉलिड्स में, अगर आप देखिए सॉलिड्स में आप देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या हैं, बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के, तो अगर ये क्लोज है तो इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा. अट्रैक्शन ज्यादा होगा मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज गोइंग टू बी मैक्सिमम. ठीक है, टॉकिंग अबाउट लिक्विड्स एंड गैसेस, लिक्विड्स में तब भी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन थोड़ा बढ़ जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा आ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है? फोर्सेस थोड़े कम हो जाते हैं. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विल बी लिटिल लेस देन व्हाट वी ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ solids. In case of gases, since the particles are pretty far from each other, particles काफी दूर हैं, इनमें अब separation ज्यादा है, तो इसकी वजह से क्या होने वाला है कि intermolecular force जो होगा वो मिनिमम होगा. मिनिमम होगा मतलब कि इनके बीच में जो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो क्या है? मिनिमम है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दीज पार्टिकल्स आर प्रिटी फार फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, वो दूर दूर हैं, इस वजह से उनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है, वो काफी कम होगा. राइट, सो दिस एक्सप्लेन्स द डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्स. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? वी आर सीइंग डिफरेंसेस. ठीक है, हम डिफरेंसेस देख रहे हैं सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के बीच में. ठीक है, दैट्स इन पर्टिकुलर. इन जनरल हम क्या कर रहे हैं? इन जनरल we are attending, we are having a live session on SnapSolve YouTube channel, and you can, as I already told you, you can download the application of SnapSolve and get your queries and doubts cleared. Students from classes 6 to 12, they're all welcome. So those preparing for competitive examinations are also encouraged to send your queries and doubts on the application, where you're going to get instant solutions, right? And other than that, in order to get some free resources, ठीक है, free resources of which kind? ठीक है, notes, questions, exercises, ठीक है, other things can also be obtained from the Telegram group of SnapSolve, right? So you can always join, you can always look forward to join the group. ठीक है, चलो, सो अभी हम डिफरेंस बात कर रहे थे, इंटरमॉलिकुलर फोर्स के बेसिस पे डिफरेंस हमने देख लिया. ठीक है, नेक्स्ट इट इज गोइंग टू बी रेट ऑफ डिफ्यूजन. ठीक है ना, व्हाट इज डिफ्यूजन नाउ? अब पहले तो हम रेट ऑफ डिफ्यूजन से पहले ये समझ लेंगे कि डिफ्यूजन है क्या. डिफ्यूजन इज नथिंग बट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, आई टेल यू एन एग्जांपल. ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग होगी या उनका मूवमेंट होगा. ठीक है, कंसिडर, जैसे मान लो कंसिडर डिओड्रेंट या फिर रूम फ्रेशनर है आपके पास. तो रूम फ्रेशनर से आप क्या करते हो? यू जस्ट apply a room freshener at one point at or one corner of the room, and you get to see कि कहीं ना कहीं उसकी फ्रेग्रेंस आपको आने लग जाती है. या फिर इंसेंस स्टिक्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम अगरबत्ती बोलते हैं. तो अगर आप इंसेंस स्टिक्स को क्या करोगे? अगर आप उसको बर्न करते हो तो उसकी भी स्मेल जो है वो, उसकी जो फ्रेग्रेंस जो है वो क्या होती है? स्प्रेड होने लगती है. तो ये स्प्रेड क्यों होती है? बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर नाउ मिक्सिंग, द मॉलिक्यूल्स आर मिक्सिंग विद एयर एंड दे आर गेटिंग ट्रांसफर्ड. वो क्या होता है? मूव करने लग जाता है. तो दैट फिनोमिना इज कॉल्ड डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन इज इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. राइट, अब हम देखते हैं कि ये डिफ्यूजन का रेट सबसे ज्यादा किस में होता है. ठीक है, तो देखो, जब भी मूवमेंट ये हो रहा है तो किसका हो रहा है? इट इज अल्टीमेटली द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर विच आर मूविंग.
ठीक है, अगर आपने जैसे मैंने आपको बताया रूम फ्रेशनर का एग्जांपल दिया, सो इफ इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स और इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, तो उन्हीं लिक्विड या गैसेस के पार्टिकल्स है ना जो मूव कर रहे हैं, तभी तो हमें उसकी फ्रेग्रेंस आ रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे the rate of diffusion is directly connected to the movement of particles. It is connected to the ease with which the particles are able to move. अब आपको पता है सबसे इजीली किसके पार्टिकल्स मूव करेंगे, गैसेस के पार्टिकल्स मूव करेंगे, सो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज गोइंग टू बी मैक्सिमम, right? So if you understand the characteristics of particles, then you will be able to understand the differences between these solids, liquids and gases very easily. ठीक है, फिर आप इन differences को बहुत easily कर पाओगे, right? So next, talking about solids, solids में ये rate of diffusion क्या होगा, minimum होगा। ठीक है, minimum क्यों होगा, because वहां पे क्या होता है, पार्टिकल्स आर वेरी रिस्ट्रिक्टेड, दे आर हार्डली एबल टू मूव। अगर वो मूव नहीं कर पा रहे हैं तो वो, ठीक है, वो इंटरमिक्स नहीं होंगे और डिफ्यूजन का रेट क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, इन लिक्विड्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज गोइंग टू बी समवेयर बिटवीन दोज इन सॉलिड्स एंड गैसेस। ठीक है, इनके बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। And also important thing, rate of diffusion also depends on temperature, right? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज, बिकॉज एज यू आर हीटिंग अ मैटर, आप किसी मैटर को अगर हीट कर रहे हो, उसको अगर आप हीट एनर्जी दे रहे हो, तो अल्टीमेटली आप उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। उसको अगर आप एनर्जी देते हो तो वो क्या होगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दोज पार्टिकल्स, और उनको अगर काइनेटिक एनर्जी मिल गई तो क्या करेंगे, वो मूव करेंगे, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, तो अगर उसको मोशन मिला है, अगर वो मूव कर रही है बॉडी, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि नाउ इट हैज गेन्ड एक्स्ट्रा एनर्जी। वो कैसे दिया हमने, टेम्परेचर से दिया। अगर उसको एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी मिल गई है तो टेल मी, आर दे गोइंग टू मूव इन अ बेटर वे, सर्टनली, राइट? उनको अगर काइनेटिक एनर्जी मिल गई एक्स्ट्रा तो वो क्या करेंगे, अब वो और आसानी से मूव करेंगे। ठीक है, सो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन इज गोइंग टू increase. So remember, the rate of diffusion depends on only temperature, टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, किसी एक सब्सटेंस के लिए अगर बोला जाए तो। ठीक है, बाकी हमने देख लिया कि गैसेस के लिए इन जनरल रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा, एंड इट इज गोइंग टू बी मिनिमम फॉर सॉलिड्स। इसलिए सॉलिड्स के फ्रेग्रेंसेस आपको जल्दी नहीं मिलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई गैस है तो उसका आपको फ्रेग्रेंस पहले मिल जाता है, या जो भी स्मेल है, राइट? अदर देन दैट, हाउ इज दिस टेम्परेचर गोइंग टू बी अ फैक्टर? आपको पता है कि अगर हॉट फूड है, अगर है ना, आपने देखा होगा, देयर इज एन एनसीईआरटी क्वेश्चन आल्सो, दैट द हॉट सिजलिंग फूड, स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड कम्स टू अस वेरी इजीली, राइट? लेकिन अगर ठंडा खाना है, कोल्ड फूड है, तो उसकी फ्रेग्रेंस, उसका स्मेल आपको नहीं मिलता, क्योंकि टेम्परेचर अगर कम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या है, कम है। रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है तो वो इतनी इजीली मूव नहीं कर रहे हैं, राइट? I hope that explains everything we had to study, we had to do for rate of diffusion. Next is fluidity. Fluidity is simply a phenomena in which a matter is able to flow. तो fluidity क्या होती है? The tendency of a matter to flow is called fluidity, है ना? तो this is a tendency to flow, right? सो फ्लूइडिटी, अब फ्लो कौन होगा? ठीक है, सॉलिड्स फ्लो होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो सॉलिड्स डू नॉट पोजेस फ्लूइडिटी, गैसेस डू पोजेस फ्लूइडिटी, एंड लिक्विड्स में भी फ्लूइडिटी होती है बिकॉज दे कैन फ्लो। सो हम लिक्विड्स और गैसेस को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? फ्लूइड्स कहते हैं। एंड व्हाई डू वी कॉल देम फ्लूइड्स? बिकॉज दे पोजेस फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी होती है उसके अंदर। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिफरेंस, वी सी दैट compressibility is also there. Compressibility का मतलब क्या है? That a gas, if you see, compress करने का मतलब है to apply pressure। ठीक है, कंप्रेस करने का मतलब क्या है? टू अप्लाई प्रेशर। अब जैसे मान लो देयर इज अ गैस, इमेजिन करो इस गैस की हम बात कर रहे हैं। अगर इस स्फेरिकल, आप इसको कंसिडर करो, ठीक है, अगर इस गैस को आप अगर कंप्रेस करते हो, इसका मतलब क्या है कि यू आर अप्लाइंग प्रेशर, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रेशर द मॉलिक्यूल्स, दीज मॉलिक्यूल्स, दे विल ऑल कम क्लोजर टू ईच अदर। ये क्या होंगे? ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नजदीक आएंगे, बिकॉज आप उसको कंप्रेस कर रहे हो। तो नजदीक आएंगे, इसका मतलब है कि अब ये इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो कम होने वाला है, एंड दैट विल मेक द गैस लिक्विफाई और कन्वर्ट इनटू लिक्विड। तो हम इस कन्वर्जन की बात बाद में करेंगे। अभी हम ये देखने वाले हैं कि लिक्विड्स, सॉलिड्स और गैसेस में हम
किसको कंप्रेस करते हैं, कौन कंप्रेसिबिलिटी को पोजेस करता है। ठीक है, तो वी सी दैट गैसेस आर कंप्रेसिबल, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स ऑन द अदर हैंड दे आर नॉट कंप्रेसिबल। व्हाई आर दे नॉट कंप्रेसिबल? बिकॉज दे डू नॉट हैव एनफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। आप कंप्रेस किसको करोगे, किन मॉलिक्यूल्स को पास लाओगे, जो ऑलरेडी थोड़े दूर हैं। वो दूर किस में है? गैसेस में है। लिक्विड्स और सॉलिड्स में द पार्टिकल्स आर सो क्लोज, दे आर क्लोज इनफ कि आप उनको और नजदीक नहीं ला सकते। सो देयर इज नो स्कोप फॉर कंप्रेसिबिलिटी इन केस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, राइट। सो दैट्स द डिफरेंस बेस्ड ऑन कंप्रेसिबिलिटी। सो ओके, सो हमने क्या क्या डिफरेंसेस देखे हैं? वी हैव सीन डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर। पहले हमने पार्टिकल्स देखा, उसके बाद हमने देखा कि शेप के बेसिस पे रिजिडिटी, वॉल्यूम, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, रेट ऑफ डिफ्यूजन, फ्लूइडिटी, ठीक है, एंड कंप्रेसिबिलिटी के बेसिस पे वी हैव सीन द डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग इफ देयर इज एनी क्वेश्चन you can come forward, but I don't see any. No problem. Chalo. I suppose everything is clear to you. So that was the introduction to matter in our surroundings. I'm going to have probably the next class on Saturday, whenever it is, that is going to be updated on the YouTube channel of SnapSolve. In the next class, we are going to summarize all the differences, and then we are going to enter into the next part of the chapter where we will discuss interconversion of states of matter. We are going to discuss how these states are interconvertible. ये solids, liquids और gases जो हैं, इनको हम आपस में कैसे convert कर सकते हैं, interconvert कर सकते हैं, right? So that's something that we are going to see in the next class. And I hope more people will join. I can see some of them are already there. Fine. Okay, so now, whenever we meet next, we are going to carry this forward. Meanwhile, I'll ask you to download the SnapSolve application and also post your doubts and queries there. And if you want to refer to some study materials, some other resources, you can always rely on the Telegram group of SnapSolve. So I encourage you to join that. ठीक है, चलो, that was a good session. अब अगली बार मिलते हैं to carry this chapter forward, right? Okay, thank you everyone. I'll just wait for a minute to see if there are any queries. If there are no queries, then I'll hang up, right? So that's all for today. And I'll just wait for a minute to see if there is any question coming up. Okay, I guess there is no question coming up. So that's all for today. And we will meet next to discuss this chapter